Hello students, a warm welcome. So we are discussing the important concepts from the subject of organization theory and behavior. Okay, so we saw in the started in the last video. So just about myself, Professor C.A. Chelladurai, a practicing chartered accountant and commonly called as CD sir by the students, by regular students. So just quickly, we covered the first unit number one, that is introduction to organization in the last video. So today we'll be looking into the organization theory. Okay, some theory from the theory, some concepts will look into today. So we'll move to the point. Okay, so organization theory. So these are the some concepts we are going to learn today. So mainly we divided four parts, that is organization structure and organization, the management theories and approach. What are certain management theories and approach? The management practices and tools. Okay, so what are management practices and tools being applied in the organization? Then about systems. Okay, so these are the areas which we're broadly covering. Okay, so let's go to the topic under the organization structure and organization. Sorry. So, so in the first concept is chain of command. So basically chain of command. So you'll be heard, अरे command आना है, command दिया है इसने. So basically it's what? It's a line of authority within an organization. Okay, defining who reports to whom. Okay, so basically command किससे आना है? That's how, like who report to whom, line of authority. The same organization, there will be people who will be listening to one person but not to other person. Okay, so it's all define the thing. ओके सो एग्जाम्पल आप देखेंगे. आप इंडियन रेलवे के एग्जाम्पल लेते हैं जिधर इफ यू सी अ चेन ऑफ कमांड इज क्लियरली डिफाइंड. ओके, इधर कैसे जनरल मैनेजर है एट द टॉप, ओवर्स द डिविजनल रीजनल मैनेजर्स हु इन टर्न मैनेजर्स द डिविजनल ऑफिसर्स. फिर सी इससे क्या है ना, हर एक हायरार्की डिसाइडेड है. या ऐसा नहीं कि कहाँ से भी किधर से भी डायरेक्शन आ रहा है, इट्स ऑल वेरी डिसाइडेड डिफाइंड है. ओके, उनकी तरफ इस हिसाब से होना है. एंड यू नो हाउ इंडियन रेलवे वर्क ऑल्सो, लाइक ओके, उनका एकदम सिस्टमेटिक टाइम मैनेजमेंट सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए हर एक जगह से. इट शुड बी वेरी मच क्लियरली डिफाइंड एंड क्लियरली दे शुड मैनेज द थिंग. So that's all. So hierarchical structure ensures what it ensures. Basically ensures the orders and instruction flow smoothly from the top to the bottom level. Till the bottom last level तक it should reach. Okay. So आप देखे रहेंगे like रेलवे के like signal person से लेके the person who drives, everyone is very important, man. So ऐसा नहीं कि कोई भी किधर भी ये नहीं कर सकते. Everyone is important and that they should get the instruction the right proper hierarchy level. That is very important. So that's what chain of command. Okay. So next concept what we are going to see is the departmentation. So departmentation. अभी departmentation क्या है? It's a process. It's a process of dividing an organization into different departments. See, basically काम तो है, अभी काम है तो उसके अंदर एक काम के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स. ओके, जो करना है अभी. सी एक्स वाई जेड कंपनी ले लो जिधर प्रोडक्ट बनाने के लिए, बट उनके पीछे बैकअप में काफ़ी प्रोसेस है. ओके, सो दैट्स व्हाई द प्रोसेस डिवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. ओके, उनका स्पेशलाइजेशन के हिसाब से दे हैव टू परफॉर्म दो टास्क. एग्जाम्पल के दौर में हम टाटा स्टील के लेते हैं. टाटा स्टील में क्या है ना, इस डिपार्टमेंट टू मैनेज वास्ट ऑपरेशन. ओके, द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट सच एज प्रोक्योरमेंट अलग डिपार्टमेंट हो गए, प्रोडक्शन अलग डिपार्टमेंट, सेल्स अलग डिपार्टमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट. Okay, etc. So each department focuses on its specific function to streamline processes and improve efficiency. So basically कैसा departmentation करने से क्या, हर एक अपना focused है, they are focused and they are doing their particular job which is being assigned to them. उससे क्या होता है कि एक efficiency बढ़ती है, efficiency आती है, process streamline होती है. Okay, that is what departmentation is all about. Okay, then coming to the formation organization, that is nothing but formal organization.
ये हमने पहले वाले वीडियो में भी देखे थे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. ओके, इट्स स्ट्रक्चर्ड, वी स्टडीड राइट. इट इज स्ट्रक्चर्ड हो गए, डिफाइंड थिंग जिसके which we are looking into, and same similar thing only. So here we just again we are looking into that. It's basically official recognized structured part of an organization. ओके, उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं. तो इधर हम एग्जांपल ले रहे हैं इन्फोसिस के. इन्फोसिस हायरार्की स्ट्रक्चर है, ऑफिशियल जॉब रोल्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये सब एकदम डिफाइंड है. ओके, ईच एम्प्लॉय इज अ क्लियरली डिफाइंड रोल विद इन द फॉर्मल स्ट्रक्चर. मतलब हर एक का एक डिफाइंड रोल्स है बॉस. मतलब उनका अपने अपने रोल्स डिफाइंड है. उनके दैट इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर के हिसाब से वो डिफाइंड है. इज डॉक्यूमेंटेड इन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड पॉलिसी मैनुअल्स. एंड सेकेंडली क्या, ये एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंट. ऐसे नहीं कि हवा में बोला बोला चीज़ है. मतलब डॉक्यूमेंटेड, मतलब हर एक चीज़ है ब्लैक एंड वाइट पे लिखा हुआ चीज़ है. सो एनी एम्प्लॉयज वांट टू सी व्हाट ही वेयर ही इज देयर, ही कैन लुक go to his document and he can look into that manuals what all things to be done. So it's all formally documented. So formal organization. Hmm? Then comes this functional foremanship. Functional foremanship क्या होती है? Basically, a principle of scientific management where supervisory roles are divided according to function. ओके, इधर क्या बता रहे कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन के हिसाब से रोल्स को डिवाइड किया हुआ है. तो अभी अशोक लेलैंड की इधर जाते हैं. अशोक लेलैंड के एग्जांपल लेते हैं. तो प्रिंसिपल फंक्शनल फॉर्मेशन कैन बी सीन इन द प्रोडक्शन प्लांट where different supervisors are responsible for specific functions such as quality control हो गया, maintenance हो गए, production scheduling हो गए. ये है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन ही है, उसके अंदर भी अलग अलग फंक्शंस हो गए. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. तो हर एक में फंक्शन, तो उसके लिए अलग अलग सुपरवाइजर को डिफाइन किया हुआ है. तो एक देखेगा क्वालिटी कंट्रोल के बारे में देखेगा, एक होगा मेंटेनेंस का देखेगा, एक होगा प्रोडक्शन शेड्यूलिंग देखेगा, लाइक दैट. So this allows for specialized oversight and more efficient management of production processes. So overall production process एक efficient way में it happens. Then coming to the next concept, it is span of control. Okay, span of control अभी क्या है? It's the number of subordinates that a manager or supervisor can directly control. So basically द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट. बेसिकली इसमें क्या है ना, इसमें ऐसा बताना चाह रहे हैं कि एक पर्सन, एक मैनेजर है, कितना जन को हैंडल कर पाएगा. दैट इज व्हाट नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट दैट मैनेजर और सुपर कैन डायरेक्टली कंट्रोल. ओके, तो एग्जांपल की दौर में देखेंगे. इफ यू सी इन एचडीएफसी बैंक, अ ब्रांच मैनेजर टिपिकली oversees a span of control that includes various subordinates such as teller, loan officers, and customer service representatives. Okay, so basically, if you see in a branch, HDFC branch we are taken, or any bank branch, if you see, so one branch manager will be there. Under that, various person will be working under the branch. Like one will be looking at cash counting, cash collecting. One will be taking the account of लोन के रिलेटेड काम करते रहेंगे. एक जन पासबुक अपडेशन करते रहेंगे. एक जन इंक्वायरी फ्रंट डेस्क में लेके उनका कस्टमर के प्रॉब्लम समझेंगे. लाइक दैट ईच विल बी असाइन टू वन थिंग, बट ओवरऑल अंडर कम्स अंडर वन मैनेजर. सो उस मैनेजर के स्पैन में ऑल पीपल गेट्स कम अंडर देम. ओके, दिस एंश्योर दैट मैनेजर कैन effectively supervise and provide guidance to each subordinate. तो प्रॉपरली उसके अंडर के लोगों को प्रॉपरली गाइड कर पाए. ओके, दैट्स व्हाट स्पैन ऑफ कंट्रोल. स्ट्रक्चर, अभी स्ट्रक्चर क्या है, हमने काफ़ी जगह देखा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ओके, व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर क्या, इज अरेंजमेंट ऑफ एंड रिलेशन बिटवीन द पार्ट्स और एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, मतलब एक पार्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसको स्ट्रक्चर बताते हैं. रिलायंस इंडस्ट्री अगर देखेंगे, एज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग वेरियस एसबीयू, दैट इज स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स. हमने पहले भी देखे थे रिलायंस के एग्जाम्पल, वेर उनका कैसा है कि काफ़ी अलग अलग उनका नो स्ट्रक्चर है. बेसिकली यूनिट्स है. दैट इज पेट्रोकेमिकल का काम करते हैं, रिफाइनिंग रहते हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, रिटेल है, टेलीकम्युनिकेशन है, सो मेनी थिंग्स. ओके, एंड ईच एस बी एस ओन इंटरनल स्ट्रक्चर दैट अलाइन विद द ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी मतलब इंटरनल एक स्ट्रक्चर है. मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ब्रॉडर लेवल पे उनका इंडिपेंडेंट उनका खुद का एक है स्ट्रक्चर है, डिफाइंड है. तो अल्टीमेटली अलाइन होना चाहिए फाइनल ओवरऑल स्ट्रैटेजी के साथ में, कंपनी की स्ट्रैटेजी. ओके, दैट इज व्हाट स्ट्रक्चर इज. देन इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन.
That is nothing but informal organization. Same that we have discussed. That's the unofficial and informal relationship and network within the organization. So example Wipro अगर लेते हैं अगर क्या होता है informal organization exists where employees form network and relationship based on shared interest, project or social activities. So this informal network can often facilitate future problem solving and knowledge sharing. ओके सी सिंपल एग्जांपल बताया ऐसे अभी कैसा है टी कट्टा ले लिया टी कट्टा में बैठे हैं अभी अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग बैठे हैं ओके साथ में टी पी रहे चाय पी रहे नाश्ता कर रहे ओके बट अभी कैसे फॉर्मल इसमें एम्प्लॉय में हेजिटेट यार कैसे पूछे यार इसको हाउ टू आस्क एंड दो टाइप ऑफ माइंडसेट पे रहता है बट उधर ही आके एक टी कट्टा फ्रेंड सर्कल के साथ में बैठता है तो उसको लगता है कि हाँ बाबा ठीक है ना तो जैसे if even some people will अरे क्या हुआ भाई कितना उदास क्यों है तो ऑटोमेटिकली he comes up he tell his problem चलिए टेल कि सम फॉर एग्जांपल ही टेल कि अरे बाबा मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है ये काम कैसा करना है या एक्सेल फॉर्मूला वॉट एवर यू टेक देन कैसा है किसी न किसी के झटके में उसका सॉल्यूशन मिल जाती है अरे ऐसा कर या सॉल्यूशन मिलती है उनके थ्रू या किसी और के थ्रू भी वो करवाते हैं बिकॉज दे ऑल एक ग्रुप बन जाते हैं उनका एक शेयर्ड इंटरेस्ट रहता है प्रोजेक्ट सोशल एक्टिविटी ओके सोशल एक्टिविटी के साथ उन लोग का एक ग्रुप बनती है so that is all informal organization. This informal network often practice facilitate quicker problem solving and knowledge sharing. Sharing. We saw that. Okay. Unit of command. Unit of command क्या management principle stating that each employee should report to one and only one manager to avoid confusion. मतलब कमांड जो है आना चाहिए इट शुड बी फ्रॉम ओनली वन ऐसा नहीं कि मल्टीपल बॉस है मल्टीपल कमांड दे रहे तो एक ये हो जाता है ओके तो एग्जांपल अभी टाटा मोटर हो गया प्रिंसिपल यूनिट ऑफ कमांड इंश्योर दैट ईच एम्प्लॉय रिपोर्ट्स टू ओनली वन सुपरवाइजर ओके क्लियर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कंफ्यूजन एंड मेंटेनिंग अकाउंटेबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ओके मतलब एक क्लियर रहता है बॉस मतलब एक जन से आता रहता है उनको भी माइंड फ्री रहता है कि हाँ बाबा ये काम है मेरे को ये करना है ओके दैट इज यूनिट ऑफ कमांड देन फिर मैनेजमेंट थियरी एंड अप्रोच हम देख रहे हैं तो इधर क्या है हैवथॉर्न स्टडी हैवथॉर्न क्या है ना इट्स एक हे एक प्रोफेसर है मतलब ही व्हाट वी कैन से मैनेजमेंट प्रोफेसर वी कैन से so he is somewhere in the 1920 that time okay so 100 years before he has invented in US he did some study theory he did some research or we can say studies he conducted where a series of studies okay that examined how different work condition affected employee productivity and led to the human relation movement बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं कि उन्होंने एक अलग अलग थियरी स्टडीज किए तो उससे क्या मालूम पड़ा उनको कि बाबा डिफरेंट डिफरेंट वर्क कंडीशन पे एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी कैसा हो रही है ऊपर बढ़ रही है नीचे आ रही है तो उससे क्या हुआ फाइनली उन्होंने ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट एक क्रिएट किया उससे दैट इज हाउथॉर्न स्टडी के बारे में और हाउथॉर्न स्टडी फाइंडिंग उनका जो फाइंडिंग एलिफेट इन कंपनीज लाइक इन्फोसिस where employee welfare program दिया team building activities दिया focus on creating a positive work environment और emphasize to boost productivity and job satisfaction मतलब अलग अलग employee देते उससे क्या होता है कि थोड़ा relaxation देता है employee का mindset he'll be उससे ultimately overall objective एक productivity boost होती है ओके देन जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है उनको बाबा हाँ अच्छा है यार मतलब अच्छा देख रहे एम्प्लॉय वेलफेयर ऑल दिस थिंग मैटर करते हैं छोटी छोटी चीजें बट मैटर करती है अंडरस्टूड then human relation movement okay so we saw here what human relation movement so what is human relation movement a management approach focusing on psychological and social aspects of work मतलब जो एम्प्लॉय है उनका साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क को ध्यान पर रख के एम्फसाइजिंग एम्प्लॉय वेलफेयर एंड मोटिवेशन तो अभी आईसीआईसीआई बैंक को लेते हैं हम लोग आईसीआईसीआई बैंक ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एविडेंट इन देयर एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज such as leadership development programs, wellness program, regular feedback sessions. So these initiatives aim to enhance employee morale and motivation. तो वही बेसिकली इधर भी वही कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू से टेल इज वेरियस इनिशिएटिव से क्या होता है एक एम्प्लॉय की कनेक्टिविटी रहती है साइकोलॉजिकली दे फील हैप्पी okay that's what thing is then coming साइंटिफिक मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है मैनेजमेंट थियरी में फ्रेडरिक टेलर जो भाई साहब है इनके थ्रू थियरी है फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड लेबर प्रोडक्टिविटी थ्रू सिस्टमेटिक मेजरमेंट एंड एनालिसिस
मतलब इसमें क्या है ना, बेसिकली इसको ऐसा बोल सकते हैं कि एक इकोनॉमिक एफिशिएंसी, मतलब एक जो काम है तो जो 2 घंटे में करने वाले काम को हाउ यू कैन कंप्लीट इन हाफ एन आवर और मे बी इन 1 आवर। ओके, सो दैट यू कैन सेव दैट मनी हार्स। ओके, उससे क्या होता है, अल्टीमेटली फायदा होती है कंपनी को। मतलब जो 2 घंटा पे करना था उसको 1 घंटे में, और उसी 1 घंटे में और कुछ उसको करवा सकते हो उससे। अंडरस्टैंडिंग? So that's what it's telling. Economic is labor productivity to systematic measurement analysis. So example देखें तो the principle of scientific management applied in companies like Maruti Suzuki. Okay, अभी बेसिकली मारुति सुजुकी में देखते हैं असेंबली लाइन प्रोडक्शन इज ऑप्टिमाइज्ड, मतलब जो लाइन प्रोडक्शन होती है उसको इतना तरीके से ऑप्टिमाइज किया हुआ है उसको टाइम एंड मोशन स्टडी के थ्रू टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अल्टीमेटली कैसे एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी पे फाइनली मोटिव रहती है। ओके, System approach. System approach के management perspective that views an organization as a complex set of interrelated and interdependent parts working together to achieve common goals. ओके, मतलब एक मशीन है, मतलब मशीन एक होती है, मतलब इट्स लाइक अ सिस्टम, मतलब एक मशीन जैसी है, मतलब कैसा है, वेरियस पार्ट्स रहते हैं, तो उसमें एक पार्ट भी टूट गया कुछ हो गया तो ऑटोमेटिकली अफेक्ट होती है फाइनल रनिंग ऑफ द मशीन पे। तो सेम है इधर भी, अलग अलग इंटरलेटेड इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स है वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स। ओके, अभी एचक्यूएल का एग्जांपल लेते हैं, वेयर एम्प्लॉयज सिस्टम अप्रोच by integrating various functions such as supply chain management, marketing, and finance to work together seamlessly towards common organizational goals. तो उनका ऑब्जेक्टिव है कि साथ में काम करके अल्टीमेटली अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ओके, सिस्टमैटिकली काम करना है, सिस्टम अप्रोच। Then management practices and tools. Here we'll see the differential piece rate. So differential piece rate इसे the word से समझते हैं अपने को कि मतलब basically how efficiently you produce and how you can get earn something extra. Okay. The pay system basically the pay system है where employees are paid a higher rate per piece if they exceed a standard output level. तो ये basically motivation, मतलब जल्दी फास्ट करेगा तू तो थोड़ा एक्स्ट्रा पे मिलेगा तेरे को, दैट्स व्हाट। ओके, इट्स अ विन विन सिचुएशन बोल सकते हैं हम इधर। तो एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले लो, हीरो होंडा मोटर कॉप के, हीरो मोटर कॉप, the differential piece rate system might be used to incentivize workers, the employees who produce more than the standard number of pieces in a given time or paid a higher rate per piece। अगर जल्दी करेंगे तो उसको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा देंगे। ओके, अल्टीमेट कंपनी बेनिफिट हो रही है और एम्प्लॉय बेनिफिट हो रहा है, दैट इज द थिंग। टाइम स्टडी, टाइम स्टडी क्या है अभी, साइंटिफिक एनालिसिस है ऑफ अ वर्क एज वी सॉ अर्लियर मोशन एंड टाइम स्टडी। इसमें क्या होता है, डिटरमाइन मोस्ट एफिशिएंट वे टू परफॉर्म देम एंड सेट स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस। ओके, so scientific analysis of work tasks to determine the most efficient way to perform them and set standards for performance। ओके, मतलब एक स्टडी भी करना और एक स्टैंडर्ड भी सेट करना, बॉस यस इतना करना है। एग्जाम्पल टीसीएस लेते हैं, टाइम स्टडी करें टू एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज द टाइम टेकन टू कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टास्क। ओके, बेसिकली क्या है कि मतलब अभी सॉफ्टवेयर कंपनी में कैसे उनको क्लाइंट को डेवलप करके देना है सॉफ्टवेयर या वट एवर द टास्क टू डू दैट। ओके, अंडरस्टैंड? सॉरी। सो तो इन दैट केस तो कंपनी मैनेजमेंट क्या सोचेगी, बाबा मेरे स्टाफ को जल्दी कैसा फ्री करवाऊँ, अल्टीमेट बिलिंग तो करना है, जल्दी फ्री करूँगा तो जल्दी आई कैन बिल देम एंड आई कैन फोकस ऑन अदर एरिया ऑफ वर्क। ओके, सो लाइक दैट दे डू दैट, एफिशिएंट वे फाइंड करते हैं एंड अकॉर्डिंगली सेट करते हैं, परफॉर्मेंस सेट करते हैं। सो दिस विल हेल्प द सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इंप्रूव ओवरऑल एफिशिएंसी। ओके, system. So the interconnected set of elements and processes that work together within an organization to achieve its goals. Okay, मतलब एक interconnected set of elements and processes that work together within an organization to achieve its goal. As we mentioned, system, system का काम जो है वो। एग्जाम्पल कंटेंट फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट अब एग्जाम्पल लेते हैं, जिधर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो ऑपरेट्स एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम कंप्राइजिंग वेरियस एलिमेंट्स लाइक वेबसाइट इंटरफेस, वेबसाइट जो कस्टमर को देखना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बराबर होना चाहिए, लॉजिस्टिक्स बराबर होना चाहिए, कस्टमर सर्विस, डेटा एनालिटिक्स, सारा कुछ सिस्टम मतलब एक सिस्टमेटिकली काम होना चाहिए एंड शुड बी परफेक्टली हैंडल। दिस इंटरनेट एलिमेंट्स वर्क टुगेदर टू अचीव द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस फॉर कस्टमर्स।
Okay. So that's all friends, ये unit के लिए. So we have covered various concepts in this unit. So thank you so much. So we will see in the next unit. Thank you so much. Happy learning. Okay. Till then, bye.